हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर स्टीव चार्ल्स, हु इज़ हेड ऑफ स्काउटिंग एट रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स। तो आज के एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ऑल ओवर द इंडिया से आरएफआईसी अपने जो एकेडमी के लिए है किड्स है उसको स्काउट करते हैं, क्या है पूरा प्रोसेस, एंड स्काउटिंग में वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे फोकस करते हैं कि जिससे बेस्ट टैलेंट हमें मिल पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टीव, हाउ आर यू? I'm doing very well. Thank you. How are you? I'm also good. So my first question would be the simple one. Ki every year you watch thousands of players. So what still motivates you, excite you when you go into the pitch? Uh, I think it's always exciting to be on the pitch, Hmm. having a background of football and playing the sport myself, coaching. So जो एक्साइटमेंट होता है कि जब प्लेयर खेलता है, Hmm. जो फ्री माइंड से खेलता है, Yeah. एंड स्पेशली व्हेन आई ट्रैवल एंड स्काउट प्लेयर्स एंड लुक फॉर प्लेयर्स, इट्स जस्ट दैट every time a player gives us a different feeling. Hmm. Every region is special, every player is special. So to look at that is quite exciting. Hmm. So it's never boring to watch good players or Yeah. just players in general. Yeah. So when you see any player first time, what is the first thing you notice in him? Uh, Look, firstly, many things are there that Hmm. goes into place, but the first thing when I look at a player is how involved the player is while playing, Oh. Hmm. and how aware he is about his surrounding. Hmm. So there are many players who know that they come for a selection Hmm. or for a scouting session, what we Yeah. call it as a scouting session. So they are very aware of it. Hmm. और कोई प्लेयर है जो जस्ट खेलने के लिए खेलता है, हाँ. उसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन कौन है, मैं कहाँ आया हूँ, मुझे To have just fun. just fun. Yeah. So these are special moments, and these are players who really show good attitude. That's what we Yeah. want, where they don't care about the external factor, but they're just focused on the football bit of it. Hmm. So सो वी विल टॉक अबाउट स्काउटिंग इन डिटेल, बट सबसे पहले थोड़ा सा आप जो हमारे फैंस हैं उनको ये बताइए कि जो रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स है उनकी जो एकेडमी के लिए आप प्लेयरों को स्काउट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कितने स्टेप रहते हैं, और अगर कोई मान जी कि यहाँ पे एक लोकल छोटे से कोई यहाँ पे टाउन से बच्चा है, उसको अगर इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होना है तो व्हाट विल बी द पाथवे? okay, firstly, our process of scouting is quite robust, Hmm. and it's not only from the footballing hotspots. Of course, we are there, Hmm. but we are spread across 22 locations in the whole country. हमारे पास हर लोकेशन में स्काउट्स है जो कॉन्ट्रैक्टेड है हमारे साथ, और उनका काम होता है कि अपने लोकेशन में जाकर मैचेस देखना, टूर्नामेंट्स फॉलो करना, लोकल एकेडमीज विजिट करना। तो हर स्काउट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने रीजन का बेस्ट टैलेंट शॉर्टलिस्ट करना है। और इसका जो प्रोसेस होता है एंड टू एंड, जब तक हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं और जब प्लेयर यंग चैम्प्स बनता है, इसको कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं। ओके. तो हमारा एक सिंपल, आई वुड से लाइक सिंपल फंडा है कि कोई भी प्लेयर को एक ही बार एक ही परफॉर्मेंस के थ्रू हम उसे जज नहीं करते. जज नहीं करना चाहते। हमें प्लेयर को पूरे साल में मल्टीपल सिचुएशन फेजेस. सिचुएशंस और मल्टीपल फेजेस, यू कैन से वी वांट टू सी द प्लेयर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक दिन हमने प्लेयर देखा, उसका खराब दिन भी हो या सकता है, ऑब्वियसली एक दिन वो स्टैंड आउट भी खेल सकता सकता है। है. तो तो हमें पेशेंटली देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है, अपना टैलेंट शो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, और पर्सनली मैं हर एक लोकेशन में जाता हूँ साल में 3 बार मिनिमम। सो बच्चा मुंबई आने से पहले, जो हमारे नेशनल कैंप में आने से पहले, मैं बच्चे को 2 बार तो देख चुका होता हूँ, टू मेक दैट जजमेंट इफ द बॉय हैज टू कम टू द नेशनल कैंप। So it's simple. The first layer is our regional scouts filter the players. Second is we get all the good players who've been shortlisted, or other all the high potential players who are shortlisted under one together, and we organize games for them, because we don't have a lot of tournaments at that age group what we are scouting, especially under 14s. In locations where there are tournaments, it's a luxury. When there is not, we get all the best players together, and they play amongst themselves. So when the best plays against the best, then you exactly understand
things like character, attitude, how they are, within their locations. Then happen that we call as a review session. After the review session is a regional camp that happens in the month of March to April, where again from the review session we shortlist a few players. We do a complete training session when we do a regional camp. Okay. So training session is designed in the form of right from the warm up till end games. At under 14, when we are scouting, we don't play 11v11. We play 7v7 format, so that there is always pressure on the ball. There is maximum touches a boy can get, and enough chance for him to show. So then from the regional camp, the entire regional camp is recorded and it's sent to all the young champs coaches. All the coaches watch, and once they have access to the videos, they give their feedbacks to me. We correlate the feedbacks and to see how I have seen the player, and then a short list of 60 players is invited for the national camp. From the national camp, we again have a 5-day fully. It's a residential national camp where young champs and Reliance bears all costs of the player. So इसमें कोई player से कोई हम खर्चा नहीं करवाते हैं. So in that, player goes through multiple formats of games, right from 4v4 to 11v11 on all days. Trainings, अपने biological age, bio bands जो बोलते हैं उनका grouping होता है, chronological age का grouping होता है. तो इतना कुछ करते हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को बेस्ट पॉसिबल अप्रोच और बेस्ट पॉसिबल टाइम और चांस मिले अपना टैलेंट बताने के लिए. सो ऑल दिस गोज ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 9 months to get a player and say that he is a young champ. So it's a thorough process, Yes. I think. बट अगर कोई मान जी कि देयर इज एनी स्पेसिफिक टूर्नामेंट की जहाँ पे आपके जो रीजनल स्काउट है वहीं से वो स्काउट करते हैं, या फिर कोई भी लोकल लेवल टूर्नामेंट भी वो देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी जो यंग बच्चे हैं उनको लगता है कि आप एएफएफ की नेशनल लेवल यूथ लीग्स या फिर आपके स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट्स है उसमें खेले हैं तभी आपको यू कैन से कि सपोर्ट किया जाता है. तो ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी टूर्नामेंट वो खेल रहा है और अगर आपके रीजनल स्काउट वहाँ पे है तो दे कैन गेट अ चांस? यस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर टूर्नामेंट से ही स्काउट करते हैं. हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम जितने भी टूर्नामेंट्स हो हमारे स्काउट्स जाते हैं, बट अपना देश इतना बड़ा है कि हर कोने में हम जा ही ना सकते, मुश्किल है. लॉजिस्टिकली इट्स अ चैलेंज, राइट? इवन आफ्टर traveling the length and breadth of the country 3 times, I still feel I have not explored enough every year. And with that, we have also from the last 4-5 years, we have been with AI Scout. That's an online scouting platform where that platform takes us to places where our scouts can't go. True. So that also is a portal where kids can do training from their own comfort, from their own space. उसमें कोई ground और ये बुक नहीं करना है, आप घर में भी कर सकते हो, आपका बालकनी है वहाँ भी ट्रायल कर सकते हो. तो हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम चैनल्स या पोर्टल्स ओपन रखें, वेयर स्काउट्स हो गया, टूर्नामेंट्स हुआ, ऑनलाइन हुआ है, जितना मैक्सिमम पोर्टल्स रख सकते हैं फॉर अ प्लेयर टू रीच आउट टू अस, वी इंश्योर दैट दैट इज टिक. दैट्स ग्रेट. तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन डिटेल ये बात करना चाहता हूँ कि आप जैसे आपने बोला कि आपके रीजनल स्काउट से, तो आपकी ओर से उनको कोई स्पेसिफिक यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है कि वी वांट दिस काइंड ऑफ ए प्लेयर या फिर दिस काइंड ऑफ ए थिंग, क्योंकि आपका जो आरएफआईसी का जो फिलोसॉफी है एज एकेडमी उसके बेसिस पे वो थोड़ा सा बताइए. तो हमारे पास जितने भी स्काउट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत सालों से जुड़े हैं. कोई जो स्काउट्स है किसको 8 साल हुआ है, 9 साल हुआ है, कि कोई स्काउट्स है जो 5-6 साल से हमारे साथ है. तो हर साल हमारा स्काउटिंग नेटवर्क है जो बढ़ते जाता है. हम स्टार्ट किए थे 8 स्काउट से, 8 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, आज हम 27 स्काउट्स है. इसमें बहुत सारे इंटर्न्स भी है जिसको जो पैशनेट है स्पोर्ट के लिए, जिनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने रीजनल के, वो भी होते हैं. तो इन सिंपल वे इज देयर इज नो सेट थियोरी और कोर्स दैट यू कैन टेक एंड डू स्काउटिंग, राइट? कोचिंग कोर्स जैसी होती है, तो स्काउटिंग का ये होता नहीं है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्काउट्स को मुंबई बुलाते हैं. अगेन मुंबई बुला के हम 1 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं उनके साथ. और उनको हम बताते हैं कि एकेडमी की रिक्वायरमेंट्स क्या है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब वो हमारे एकेडमी के प्लेयर्स को देखते हैं 1 वीक ट्रेन करते वक्त अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, राइट फ्रॉम अंडर 14 टू और अंडर 19 टीम, तो उनको क्लियर आइडिया और एक बेंचमार्क पता चलता है कि किस टाइप का प्लेयर है और यहाँ पे क्या चल क्या रहा है पहली बार. क्योंकि अगर आप जानते नहीं हो
तो आप क्या स्काउट कर रहे हो, Exactly. right? So you are clueless. Hmm. So and we have most of our scouts who've also played the game, who've been coaches, who've been parents, who want to help. So there is no criteria to be a scout with us. It's just that love for the sport, love to promote the right talent. That is very important. आपको पता है जो एज फ्रॉड का भी जितना होता है, तो बट जो भी हमारे साथ जो जुड़ता है उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम किस लेवल पे काम करते हैं, एंड वी इंश्योर दैट दे आर गॉट टू मुंबई, they get a first hand experience of the academy, how the academy functions, and what is the need of the academy. So it's a clear understanding. And also when I visit to their locations, I spend 2-3 days with them on ground to help them see talent the way we see it. Okay. हर किसी का नजरिया अलग होता है, and which is fair, but also then it's also on ground hand holding. So you can say it's type of a scout education also what we try to do. How is it important for you to go there and watch the player live and to see the video? Because we see most of the scouts or coaches at a youth level or at a grassroots level judge players based on their video or that kind of a thing. So how is it? How does that make difference if you watch a player live and you see their video? Because I think video is a supportive thing. Yes. Look, the bigger the beauty, I would say, of going to a location and watching a player firsthand is one, we get to see the player in his own environment. Yeah. Right. And as a scout, it is very important to also see things which is off the pitch, to understand the culture of the place where the boy is coming from, like understanding the geography of that location, how understanding the logistical challenges what a boy takes to come to a ground to play, because ultimately we are scouting for a residential program. We are going to uproot that boy from his Parents. state, bring him to Mumbai. So we have to understand what the dynamics of that region very well as a scout. It's not only football, right? Our academy also focuses, it's a holistic development academy, where education and football goes hand in hand. So we need to understand from which school he's coming from, what is the background of the player. Everything is important. So then I feel that it is a big it's a benefit that when you go to a region, so it's not only football, that as a scout you understand the external factors of the player where he's coming from. So that's a great value. True. So आपने जैसे भी बोला एज फ्रॉड का, which is a big problem in Indian football, and so many people in ecosystem, different stakeholders talk about it. So आपका जो ये पूरा स्काउटिंग का प्रोसेस होता है फॉर दी RFIC, उसमें किस तरीके से आप ये जो एज फ्रॉड है उसको यहाँ पे आई वुड से कि फिल्टर आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू ऑल दी अदर थिंग्स? देखो, ये एज फ्रॉड जो है वो तो हमें सबको पता ही है कि ये ना कोई एक सिर्फ फुटबॉल में ही है, बट ये अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स है, सभी स्पोर्ट में है। इसमें कोई आप एक लोकेशन को आप बोल नहीं सकते हो कि यही लोकेशन या यही रीजन से हो रहा है, ये सब जगह है। समथिंग व्हाट वी डू इज डॉक्यूमेंटेशन, तो सबके पास हो रहा है ना, इसमें बच्चों की गलती नहीं है कि उनके पास अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आ गया है, तो इसमें बड़ों का हाथ है। तो इसमें बच्चे का कोई इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. It is just that it is more of a moral issue than a system issue, because everyone wants to do performance. सबको जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि what the child will face in the future, but we want to win. So that is a big challenge, but something at Young Champs, what we train our scouts, what our coaches are also well versed with, and also is something called as eye test. आप जब एक बच्चे को देखते हो, आप 13-14 साल के बच्चे को देखते हो कि बच्चा दिखना चाहिए, है ना? तो वो एक आई टेस्ट होता है. इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस, वी वांट टू सी हाउ द बॉय इज, एंड और हम साल भर में इतने प्लेयर्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक 13 साल का बच्चा कैसा बिहेव करता है. ऑफ कोर्स कोई फिजिकल मैच्योर होता है, कोई फिजिकली डोमिनेंट होता है जब खेलता है, तो वो आउटलायर्स होते हैं. ऐसे नहीं कि जो बच्चा बड़ा दिखे वही ओवर एज हो, आउटलायर्स होते हैं. बट हम उसको किस नजरिया से देखते हैं, किस टाइप का स्क्रूटिनी करते हैं, कितने डेप्थ तक जाके फाइंड आउट करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो हम वो पूरा करते हैं. जैसे कि हमारा स्काउट इतना है कि बच्चे के मोहल्ले में जाके पूछता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
to get the understanding of which coach is playing under, coach का background क्या है, academy का background क्या है, and so much so that school के marksheets देखते हैं हम. जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो, अगर समझो बच्चा 14 साल का है तो मतलब 7th स्टैंडर्ड तक तो आया होगा, एक बॉल रफ आइडिया लेते हैं हम. सो एंड देन एवरी स्टेट इज डिफरेंट, बट फ्रॉम 6 year old to 14 year old we get to see the series of mark sheets, so we try to make sense of it. बाद में जाकर हम all documentations are in place, then still there is a red flag, तो हम देखते हैं कि फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट से आया है कि नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रेंड एनवायरनमेंट से आया तो बच्चा हमेशा थोड़ा फास्ट होता है, डेवलप्ड होता है. So there are multiple things to see. It's not just that if he's big, he's overage, or something like that. If he has the right documents and if he sees, but we have to play around and see how you make sense of it, of that thing which is available. So, I think that is a more, you can say कि effective process, जो कि अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ दी एकेडमीज या फिर टूर्नामेंट के लिए क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि भाई TW3 टेस्ट है, बट हम सब जानते हैं कि उसमें भी देयर इज ए मार्जिन ऑफ एरर्स. हाँ, सो आई थिंक बैकग्राउंड चेक करना और ये सारी चीज़ें, और जितने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो आप एक दो फर्जी कर दोगे, बट ज़्यादा तो आप नहीं कर पाओगे. सो आई थिंक दैट इज गुड वे टू, यू कैन से कि स्टॉप द एज फ्रॉड. दूसरा एक चीज also to add, which is why a scouting process takes that long. या It is not that कि आज हमने स्काउट किया और हमको कल इन्फॉर्मेशन मिला. इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए भी तो टाइम लगता है. So which is why we have regional scouts. They know the region better than us. They know the locality better than us. They know the boys better than us. So it gives us a good understanding that how much a scout goes beyond to just not get the boy on the pitch, but beyond to find out the information about the player if it's a red flag for us. सो आप जैसे आपने बोला कि अंडर 13-14 के लिए आप अपनी एकेडमी के लिए प्लेयरों को स्काउट करते हैं, तो उसमें यहाँ पे कौन सी, जैसे बोला जाता है कि टेक्निकल, टैक्टिकल एंड फिजिकल, ये तीन चीज़ें हर कोई बोलता है. कोई भी आप यूथ फुटबॉल या फिर ग्रास रूट एकेडमीज की ओर देखे तो आपकी ओर से उसमें क्या प्रायोरिटी रहता है कि भाई जब कोई एक प्लेयर 13-14 साल का है तो उसमें टेक्निकल, टैक्टिकल एंड फिजिकल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स में वो प्रायोरिटाइज होना चाहिए? हमारे एकेडमी में तो फर्स्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that the player is technically sound. Yeah, so I've seen a lot of trials, I've been part of a lot of trials as a player also, where the physical comes first. Right? It's reverse here. The physical aspect takes time, but if the boy is if a player is technically sound, if he can play under pressure, if he's consistent in his footballing actions with his passing, receiving, and shooting, you can say, or transitions, you can say, and most important, if he enjoys playing football, that is because we're looking at 13-year-old boys. अगर उसको खुशी नहीं है खेलने के लिए खेल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट लाके खिलाता है बच्चे को, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता. तो टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट if the boy also enjoys playing football, and that is one, and see, when they are playing in their own locations, right, it is, you can say it's recreational and it's a bit competitive, but when we are scouting, it's an elite youth academy, so then it's different. It's totally different. The life of that player will totally change when he becomes into a young champs, because then we are developing him to be a professional and giving him all the resources. तो ऐसे ही नहीं कि एक टूर्नामेंट खेल के हम प्रोफेशनल बन गए हैं ना, तो उसको एक प्रोसेस होता है. So where technical ability has to be there, physical, yes, tactical not much, as long as he knows what I do with the ball, what I do without the ball. हमें उसे वो एज में जरूरत नहीं है. And like I said, we play 7v7, smaller format, so everyone attacks together, defense together. So those are the behaviors that we want to see. Those are the things. And the last part is the mental part of it, where we want to see how resilient the player is, and attitude and character, what we say. Again, ये general statements होते हैं कि the player had good attitude, the player had great character, is brave. But the fact is, what is attitude? Attitude, exactly. How can you define attitude? So if a player has a ball, and if regardless of the score line, what the game is, and if he still ability to take the defender on 1v1, that shows attitude. If his team is losing, for example, in that game, but the defender still goes for the tackling and still goes to defend 1v1 at full speed, but that is attitude for us. Even if his team is winning or losing, if the boy still runs behind to get the ball after losing, or the team is losing, he is involved, he is talking, that is attitude. So it can be categorized in a lot of ways.
So these are the finer details that we look into a boys, because when they play games, the scoreline doesn't matter for us. It doesn't matter. It's about how a player conducts himself when he has the ball, when he loses the ball, when his teammates have the ball, and when his teammates lose the ball. These are four things. To keep it very simple, we can get in-depth analysis of it, but this is what attitude, character means for us when we talk about the mental side of it. इसमें एक चीज़ जो आपने बोली अभी कि जिस तरीके से आप टेक्निकलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, हम जो यूरोपियन या फिर जो फुटबॉलिंग नेशन जो अच्छा कर रहे हैं उनकी भी फिलोसॉफी देखें तो उसमें जो ग्रास रूट या फिर पर्टिकुलरली अंडर 13 में उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो टेक्टिकल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लेयर्स। तो एक और चीज़ है जो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में मोस्ट ऑफ दी यूथ एकेडमीज में, कि वो टीम जो यहाँ पे यू कैन से कि विनिंग है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ अ प्लेयर। सो हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमी टू get more focus on the individual ability of the player, or you can say as a team to win? See, it depends on academy to academy. For us, it's very development is priority, and individual player development is priority for us. So every player has a strength and a weakness. We try to identify that and work on it. We always see the glass half full. ऐसे नहीं कि हमने प्लेयर को रेडीमेड प्लेयर लाया है और वो खेलने चालू करेगा और वो हमारे प्रोसेस सिस्टम से ही बन जाएगा प्लेयर, वैसा होता नहीं है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड दे आर 13-14 year old kids. They need hand holding, they need to be shown direction, and there are some academies who are performance based academies. So they can get ready made players, rather players who are mature to fulfill their criteria, right? So there are two ways to see it. Again, like I said, if ours is a academy that focuses on development, which is why is different, because what we try to do is talent identification. In simple language means talent means projection. So it's a period of time that correlates to your development, because development takes time. It's never going to happen overnight. And scouting, what scouting means outcome. हमको performance के लिए scout करना है, right? So there are two different. So again, getting clarity on what is talent ID and what is scouting also is not everyone is clear about things, right? So yeah, then it's very difficult to say that who is doing the right thing and who is not doing the right thing. Let's put it that way. But every academy has their own philosophy, and we purely run on like talent ID, projection of talent over a period of time, how to develop the talent. Because only scouting, only talent ID is not enough, because once the boy is here, the stages of development that the player goes through, technically, physically, tactically, mentally, is also a process, which is why the boy is here for 6-7 years, and it takes time and patience. True, absolutely. So जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 6-7 साल वो अपना टाइम गुजारते हैं, तो एक चीज़ जो है कि जैसे आपने हर साल आई थिंक 16 to 18 प्लेयर्स यू स्काउट फॉर द एकेडमी, सो कैसे उनका जब RFIC में वो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे कि देखो, जब प्लेयर अपने स्टेट में खेलता है, जब वो प्रिलिमिनरी राउंड स्काउटिंग के थ्रू जाता है, तो वो फिर भी उसके एस्पिरेशंस होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर बनने के, बट जब वो मुंबई आता है, हमारे रेसिडेंशियल एकेडमी में आता है, तो वो डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एवरी डे रिसोर्सेज मिलते हैं टू रीच हिज ड्रीम. एंड लाइक आई सेड, यू कैन नॉट जस्ट train one day or play a tournament and become a professional player. So what we do for a player is we give a direction to a player to live life like a professional every single day. Every single day. Then, so behind the scenes, when a player makes it professional, no one knows what he's gone through, the sacrifices the player has gone through, especially these kids. So it's not a normal kid's life. True. Right? So it is a process where we have to integrate the child, make him aware of his dreams, support as much as possible. End of the day, they are kids, and be patient with them. Right? We can't expect them to be or behave like professionals, which is why we say in our academy, child first, player second. वो बच्चा पहला है, उसको बच्चे के नजरिए से देखो, प्लेयर बाद में है, वो बनेगा with time and with our help and guidance, वो होगा अगर उसमें उतना पैशन है, उसमें उतना ड्राइव है। क्या कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में होता है और बाद में खत्म हो जाता है, राइट? दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड part of learning for us as an academy. We cannot force fit a child to say, now you've come to Young Champs, you have to become a professional player, right? We have to be open. So
that's how things go. So when the boy comes here, it's a totally different environment, and it is a demanding environment. It is challenging because he is with the best players around him. So the player goes through a lot, but I think as an academy with multiple departments and resources that we have, we really ensure that first we look at him as a child, second we support him for from every aspect, like is on the pitch, off the pitch, academics, to ensure that the well-being of the child is at utmost priority. So now let's talk about your experience as you traveled all over the India, and how Indian football is doing at a grassroots or a youth level. So कोई आपका कोई एक पर्सनल स्टोरी जो आपने स्काउटिंग किया हो, जो आपको पसंद हो, आपका मतलब आपके क्लोज हो कि हाँ भाई ये एक प्लेयर का, अगर आप नाम बताना चाहते तब भी ठीक है, नहीं मेंशन करना चाहते तब भी, कोई एक ऐसा स्टोरी जो आपको अच्छा लगता हो. हर एक ट्रैवल एक स्टोरी है. True. Yeah, and every player who scouted, there is a special story also behind that player, because like I said, before he comes in the academy, I've already seen him for a long time. एक journey होती है वो, जो मेरे लिए special है, player के लिए special है, because our first point of contact is the regional scout. So he knows the player knows him. Second point of contact is when I come in contact or see the player from far. So इतना बड़ा देश है ना हमारा, इतने सारे stories and success stories है, where it's very difficult to pick one. Like I said, every player in this academy is special, and there is a story. But one thing that highlights is that as an organization, we can go to every part of the country to look for players. So we don't disregard any state or city, right? So it's not only the footballing hotspot. But yes, when I started scouting first, I was very excited to travel. It was post-COVID, and especially when I went to one of the locations, Arunachal Pradesh, and there one fine day started to rain, but players and parents traveled overnight still 500 kilometers to come to the venue, waited for a long time, and from there we had one player who scouted from Arunachal, and which was the first time for us, first time for me in that location, first time to experience that weather. I don't know how Arunachal looked like also, and it was uh, raining that time. We've gone to Kashmir, right till the outskirts of say Baramulla, Uri, border area, to see kids over there. So the enthusiasm and spirit what they have, just for the love of game, and they want to do something and show themselves, is great. So I went down south to Kanyakumari. I had no clue that a location like that exists. When I went there first, I was amazed. That's where our coastal league is there right now, and there's only football. Kids only play football. Adults live by the coast, fishing. So football and fishing. And from that place, then I got to know Michael Susairaj comes from that place, who progressed his professional career. And Mizoram, of course, we have Naupang League there. It's been players from there. All the way to Gujarat, I've gone as well. We have a goalkeeper from Gujarat. Never expected, to be very honest. It's not a place where you get goalkeepers from. We've got goalkeepers from Gujarat in our academy. So if you see, it's the complete length and breadth, and multiple experiences. And from every experience, I have personally gained, we have a player in the academy. So special. सो अब इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे, मतलब जैसे आपने बताया कि पूरे ऑलमोस्ट आपने पूरे इंडिया को कवर किया है, एंड आपने हर साल कई सारे बच्चों को देखा होगा, तो कौन सी चीज़ एक जो आपको लगता है कि इंडियन प्लेयर में, यंग इंडियन प्लेयर में पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ अंडर 13 और 14 जो है, जो एक उसको एक एलिट फुटबॉलर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, और एक चीज़ जो आपको लगता है कि हम अभी भी इसमें लैक करते हैं कंपेयर टू यूरोपियन और यू कैन से कि द एशियन स्ट्रॉन्गर टीम्स? देखो, जब जो 10, 11, 12, 13 एज ब्रैकेट में जब है, ये अक्रॉस द होल ग्लोब दे आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस. व्हाई आई से दिस विद कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हम वो एज ग्रुप में हम इंग्लैंड गए हैं, we've played the likes of the Premier League teams, their teams. We've gone to Spain
as an academy. Hmm. We've played clubs over there. These are not these are clubs who are playing in La Liga. Hmm. We've gone to Japan. Hmm. Every year our under 14s go to Japan, and we can compete with those players. Hmm. It's not that we can't compete with these players. So there is enough talent in the country for sure. Hmm. But there are no competitive games, so Hmm. we are limited to the exposure that we can give, because that much we can give. Hmm. But players across the whole country need competitions. Hmm. You can't just train. Hmm. So every location has talent. Hmm. Like I told you, even from Gujarat we've Hmm. got players, even from Mizoram, even from Kashmir we have players in the academy. Kanyakumari we have players. In the rest of India also we have players from. So it's not the talent. Talent is there in abundance. What we do with the talent? What is the ecosystem, sports ecosystem doing to cater to that talent's need? Exactly. Right? Accessibility of sport, tournaments, Hmm. कितना limited है या कितना maximized है. Hmm. Whereas in other countries that is the gap. Hmm. So till 13 we compete. Hmm. Then 14, 15 to 15 to 18, there is a big gap. Big. Hmm. Right? So big example is when we had the next gen over here. Hmm. When under 14, हमारे under 14 का टीम हमने चेल्सी एंड यूनाइटेड के साथ खेला है यहाँ पे. आई थिंक 2019. Okay. 2019, 2018, 2019. Okay. And that from that team, from that Arsenal team, and from that Chelsea team, 5-6 years later, one player from Chelsea made a debut under Pochettino, first team. One player from Arsenal made a debut. That's I'm talking at the highest level. Right? So, and not to disregard, from our academy, after 5-6 years, our player also made the highest level. Mohammad Sanan played ISL. So we are also on the right trajectory. But the difference is only the gap. What is there from 14 to 18 is so big, and the competitive football that they play, Europeans or everywhere around the world, is so structured, where that is the difference. So from our bit, we are doing our best, because our players also played the highest level in Indian football at the moment. But still, you see the gap. We still have aspirations that one player from India, especially from young champs, goes and plays in Europe. That dream is still alive. But like I said, we need competition. We need good coaching structures. We need good talent ID. We need good data of players, of talented players which are there around, where clubs can go and play, can help nurture these talents, rather than only thinking about your own, for your own personal pride, to win trophies, to make a statement. But the deep understanding of what talent development is, that is the missing puzzle, right? Once you start working on these lines and you get a clear understanding, then I think we are anyways, there is talent. So this is the in-depth understanding of talent ID, scouting, coaching, player development, pathway from youth to first team. All these things are factors that need to agree. So now coming into the last part, दो तीन में आपको थोड़े से एज ए स्काउट आपके जो ओपिनियन है वो जानना चाहूँगा कि कौन सी एक चीज़ है जो आप यंग प्लेयर में देखते हो और आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, जो आपकी पर्सनल फेवरेट स्किल सेट हो. देखो, पर्सनल बायसेस तो हर किसी का होता है, ठीक है. बट फॉर मी व्हाट रियली स्टैंड्स आउट इज व्हेन अ प्लेयर इज डिमांडिंग फॉर द बॉल. ओके. When he is demanding for the ball, when he's constantly asking with his hand actions, with his voice. So that is eye-catching. It can be leadership also, but it just shows that how present the player is in that moment. Active. It's just being active, and of course, the first touch. Yeah. Sometimes it just takes a pass or a long or a shot. When you know that the sound of that itself knows that this is the right technique, and when you see it again and again. And when you see it in a 13 and a 12-year-old, you know for sure it's not trained. Of course, there are trained things, but as a scout, at least from my little experience, what I have known seeing players, I can, when they connect the ball, when they ask, how present they are not cared. They don't care about who's watching them. I think that stands out for me. So now the opposite question is, एक चीज जो आपको किसी बच्चे में या फिर यंग प्लेयर आप देखते हो जो आपको ऑफ कर देती है, आपको थोड़ा सा वो यू कैन से कि इरिटेट करती है. सी इरिटेट तो नहीं करता है, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, एज अ स्काउट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. if as a coach you can get irritated at some point, but not as a scout.
because you have to see the positives and negatives. Hmm. Every player shows that, Hmm. regardless of the level Hmm. the player has. But जानना as a scout you should know that they are children. Hmm. We are looking at children. So there will be, out of 10 things, 9 things can be off. Off. 9 things can be off. Hmm. But you still have to give your undivided attention to the boy when they are on the pitch, because वो उनका हक है, वो खेलने आते हैं, आप जा रहे हो उनको देखने के लिए. But one thing I think kids were complaining a lot on the pitch. Okay. That's a little off because yes, that जो अब होता है ना कि बॉल लूज किया बट वो डिफेंडर का गलती है, गोल मार दिया ओपोनेंट ने तो गोलकीपर का गलती है. सो दैट blaming each other is not irritating, but that is something which catches your attention, that this player is simply blaming or pushing the blame on each other. So that's it. But overall I enjoy just watching kids. सो ऑल ओवर द इंडिया में आपने ट्रैवल किया है, तो कोई एक ऐसा अंडररेटेड रीजन जो आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे आपको मतलब पता नहीं था, या फिर आप सरप्राइज हो गए कि हाँ भाई यहाँ पे भी फुटबॉल टैलेंट इस लेवल का है? कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ द इंडिया? Like I told you that COVID time में post COVID I visited Kanyakumari district, which is in the belt of केरला एंड तमिलनाडु. वो बेल्ट कोस्टल विलेजेस हम बोलते हैं अभी उसको, पूरा हमारा लीग है. दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. मुझे कभी पता नहीं था कि वो लोकेशन से इतने सारे प्लेयर आए हैं जो फुटबॉल के थ्रू अपना करियर बनाए हैं. एंड सो दैट वाज वन हाईलाइट फॉर मी. सेकंड इज अपर असम, अ प्लेस कॉल्ड दुलियाजन. दुलियाजन डिब्रूगढ़. वहाँ से पिछले 4 साल में हमारे एकेडमी में बहुत सारे प्लेयर आए. And that access I got to know because of our scout who was in Arunachal Pradesh, who said Upper Assam can be a good place. Okay. So वहाँ पे ऑयल इंडिया के प्रोजेक्ट्स चलते हैं फुटबॉल के, वो पता नहीं था कभी. And over 3 years we have 8 boys in our academy from that particular location. So that was quite surprising for me. Assam was only Guwahati, Kokrajhar and those places. That is lower Assam. Then Upper Assam, that is quite overwhelmed with how talent comes from there. Then yes, Pune has been special. Okay. In Maharashtra, Bombay, Pune. Of course, we are in Bombay. We have a program in Bombay, but a lot of players every year. We have a couple of players from Pune coming in, so that's been stand out. So these are quite some highlights that where I feel that there is talent coming. एक आपका लास्ट मैसेज टू ऑल द यंग प्लेयर्स और जो अपकमिंग किड्स वो आर स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर, जो एक स्किल सेट या फिर एक चीज़ जो आप उनको बताना चाहते हैं कि दिस शुड बी इन अ यंग प्लेयर व्हेन दे डेवलपिंग? When it's not only about shooting, it's not only about passing, but if you can shoot with both feet, you can play with both feet, pass and receive with both feet, that's a luxury. So always try to train both your feet in whatever you do. It can be a skill, it can be a pass, whatever you like, and try to be as comfortable with the ball when you have time. So always keep always keep the ball in control and do ball mastery based, जो बोलते हैं term ball mastery. But उसमें भी क्या है, वो general statement होता है. It's as simple as can you pass, receive, shoot at which speed. That's important, and with both feet. So that's what very eye catchy for scouts. If you can at a young age you can train that. That's missing a lot in Indian football also. You don't see a lot of players. They are single footed. So I'd say work on both feet. Okay, so that's it from our side. Thank you Steve for joining and giving this valuable information. So I hope guys आपको भी ये video interesting and informative लगा होगा. For more such a content, do follow Curious Study. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.